Hello children, welcome to Money is the Learning app. Today we are going to start the second chapter of your economics book, that is People as Resource. So I hope you all can see different people doing different kinds of work. Okay? So what are all doing? They all are engaged in different types of activities. And now let us discuss the title of the chapter, People as Resource. I hope you all must know the meaning of resource. आप सबको पता है कि resource क्या होता है? Resource means anything that can be used to satisfy human needs. कोई भी ऐसी चीज जो हमारे environment में available है और जिसको हम अपनी needs को satisfy करने के लिए use कर सकते हैं. Okay? तो यहां पे जब हम बात करें people as resource, so it means we are not talking about any resource that is used by human beings. We are referring to people as a resource. यहां पे हम human beings को एक resource कह रहे हैं. क्या human beings भी एक resource है? Yes. In fact, human beings or the people are the most important resource. Why? Because they are the ones who put different things into use and make them resources. अगर human beings ही ना हो तो किसी भी चीज को use कौन करेगा? With the use of their knowledge, skills and abilities, human beings transform different things available in our environment into resources. They use their skills and abilities to create newer resources. Okay? So, if we talk about the overview of this chapter, क्या पढ़ने वाले हैं हम इस chapter में? People as resource is a way of referring the population of a country as an asset rather than a liability. Generally, आप सबको पता है कि India is the second most populous country of the world. Generally, huge population is considered to be a liability. एक बर्डन ही माना जाता है ह्यूज पॉपुलेशन को कि ज्यादा पॉपुलेशन है तो इसका मतलब लोग क्या होंगे, मतलब जब ज्यादा पॉपुलेशन होगी तो देयर विल बी मोर रिक्वायरमेंट ऑफ फूड, क्लोथ्स एंड एवरीथिंग. सो ह्यूज पॉपुलेशन इज एवरी टाइम इट इज कंसिडर्ड अ बर्डन, बट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन एसेट. हाउ? व्हेन एन इन्वेस्टमेंट इज मेड इन देम. जब ह्यूमन बींग्स के अंदर, पीपल के अंदर जब इन्वेस्टमेंट किया जाएगा बाय एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट, जब उनकी स्किल्स डेवलप की जाएंगी, उन्हें एजुकेशन दिया जाएगा, जब उनके अंदर हेल्थ केयर में इन्वेस्ट किया जाएगा, तो कोई भी पर्सन एक एसेट बन सकता है सोसाइटी के लिए. सो दिस चैप्टर डील्स with this only. इसी चीज के साथ ये चैप्टर डील करता है. ये चैप्टर बताता है कि किस तरीके से जो people है, how they can be called or how they can be converted into a resource, an asset for a country, how they can use their productive skills and knowledge to be called an asset and not a liability. Okay? यहां पे कहा गया है कि जब ह्यूमन रिसोर्स के अंदर उनके अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, when they will be more educated or healthy, then this process of developing their skills, developing their knowledge and addition in their stock of knowledge and skills is called human capital formation. इस process को क्या कहेंगे हम? Human capital formation. और इसके थ्रू किसी भी person की एक वैल्यू एनहांस होगी. ओके? सो यहां पे आपको यही कहा गया है कि क्यों हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं. व्हाई आर वी स्टडीइंग अबाउट देम? व्हाई आर वी स्टडीइंग दिस चैप्टर? बिकॉज पीपल आर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज. ओके? ह्यूमन कैपिटल इज सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड और फिजिकल कैपिटल. व्हाई? बिकॉज इफ देयर विल बी नो ह्यूमन बीइंग्स who will put land and physical capital into use. It is the human being who puts all the resources together and uses the things.
Okay, that is why it is very important to keep in mind like human capital is superior than other forms or other capital or other things. Okay, that is why in this chapter we have referred people as a resource. So for studying further and watching more videos, stay connected. Thank you.